चलते हैं मेन स्क्रीन पे जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का ये रीडिंग डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस एग्जाम। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर पैसेज का डिस्कशन स्टार्ट करूँ। हाय, आई होप यू आई एम ऑडिबल। तो मुझे ये बताइए कि आपका ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा। 90% ऑफ द स्टूडेंट जो मुझे उस दिन मिले दे सेड द एग्जाम वाज इजी। डू यू एग्री कि एग्जाम इजी था? लिसनिंग बहुत इजी थी। बहुत स्टूडेंट्स कह रहे हैं दैट दे कैन इवन एक्सपेक्ट बैंड 9। एंड अगर बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग में आपने ऐसा क्या लिखा कि आपको अच्छा बैंड स्कोर मिलना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि आइल्स राइटिंग ऑफ 25 फरवरी का हम एक इवैल्यूएशन सेशन रखेंगे। आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहे मुझे अपनी राइटिंग टास्क मेरे साथ शेयर कर सकता है। जो हमारे पास राइटिंग टास्क शेयर होके आएंगे उनमें से एक सैम्पल आंसर हम उठाएंगे, उसे लाइव रहकर हम डिस्कस करेंगे और इवैल्यूएट करने के बताएंगे कि ऐसा परफॉर्मेंस करने पे आपका रियल एग्जाम में स्कोर कैसा आ सकता है। और एक रीजनेबल सैम्पल आंसर के लिए अगर आप चाहें तो आइडिया मैं अभी आपको दे सकता हूँ, या बेटर ये है कि कल के सेशन में ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन में आपके साथ वो अच्छे आइडियाज शेयर करूँ। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत ईजी था और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट थे। एंड जो अभी व्यूअर्स हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? एंड Isha is available and I highly recommend everyone whosoever is here कि एक बार आप लाइक ज़रूर प्रेस करें और आप कहाँ से हैं ये ज़रूर बताइएगा। दिस वॉज द राइटिंग पैसेज yesterday और मैं आपको बताऊं कि मेरा एक रीडिंग कोर्स है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। ओनली 999 उसका कॉस्ट है और उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीडिंग और अगले कुछ हफ्ते के अंदर अंदर हम ऐसे और नए रीडिंग्स डाल रहे हैं। ये पैसेज कम से कम 10 बार पिछले फ्यू मंथ्स में रिपीट हो चुका है। कल स्टूडेंट्स बता रहे थे कि चिली पेपर्स के ऊपर वो जस्ट रीसेंट एग्जाम में भी सेम ही आया था। कहने का मतलब आईडीपी के पास बहुत ज़्यादा रीडिंग का कंटेंट नहीं है, वो रिपीटेटिवली आपको सेम पैसेजेस दे रहे हैं। तो अगर वो आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है कि आपने बहुत सारे पैसेजेस वो कर रखे हों जो आप रियल एग्जाम में देख सकते हो। लिटरेचर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 1700 के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है। टेबल करने बहुत इजी होते हैं। डेट, उसका फीचर क्या था उस पर्टिकुलर टाइम के लिटरेचर का, बच्चों के बुक्स की बात हो रही है। उसका एम क्या था, किस चीज़ को ध्यान में रख के वो बुक बना था। एंड फाइनली एग्जाम्पल्स, उसके कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। बच्चे कई बार गलत कर जाते हैं। मिड मतलब अभी 21st सेंचुरी चल रही है, वी आर इन 2023। मिडल ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750 के आसपास का ईयर रहना चाहिए। कलेक्शन ऑफ राइम्स एंड डैश एंड गेम, मुझे 1750 के आसपास कहीं पहुंचना है और वहाँ पर ये मुझे मिल गया। मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, बहुत ज़्यादा कभी नहीं पढ़ते, टू द पॉइंट होके स्पेसिफिक होकर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, आंसर अपने आप मिलेगा। दो चीज़ें उसने बता दी हैं, राइम्स एंड गेम्स। तीसरी चीज़ मुझे ढूंढनी है, पूरी एक लाइन में विद कॉमर्स, वो मिलनी भी चाहिए। तो यहाँ पर 18th सेंचुरी की बात कर रहा है, मुझे अगर गेम्स वगैरह रिलेटेड या राइम्स रिलेटेड कुछ मिल जाए, देयर वी गो। इट्स 1774 भी आ गया, मतलब मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। कंटेंट्स, राइम्स, स्टोरीज, चिल्ड्रन गेम्स प्लस अ फ्री गिफ्ट। इससे क्या है क्लियर? प्लूरल है राइम्स, प्लूरल है गेम्स, और यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए हमारा, दैट इज सर्टनली स्टोरीज। तो यहाँ पे मैं स्टोरीज टाइप कर देता हूँ। राइट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड द सेम, की नेम है पैसेज सर। गाइस, ये चिल्ड्रन लिटरेचर सेम पैसेज जो कल एग्जाम में आया है, इसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगले एक आध मंथ के अंदर अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो चांसेस आर वेरी है कि सेम पैसेज आपको नजर आएगा। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ लिटिल प्रिटी पॉकेट बुक एक्सपोर्टर टू, मतलब ये बुक है जो कहीं एक्सपोर्ट की गई, मतलब एक कंट्री में तो है, किसी और कंट्री में। तो इसका स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है इसका नेम। इसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ इसके रिलेटेड ढूंढ लेना है। यही हम पढ़ रहे हैं लिटिल प्रिटी बुक के बारे में। इन मैनी वेज एंटिसिपेटेड द सिमिलर लकी डिप contents of children annuals this century. It is a tribute to Newbery's flair that he hit upon a winning formula quite so easily. Winning formula होता है कोई चीज़ बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाना। To be pirated almost immediately in America
पायरेट होता है कॉपी क्रिएट कर लेना, वैसे ये नेगेटिव वर्ड है, पायरेटेड कॉपीज जैसे होती हैं विदाउट परमिशन, लेकिन वी वर ऑल जस्ट कंसर्न अबाउट डिफरेंट कंट्री, तो यहाँ पर हमें सर्टनली क्या लिख देना है, एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ए कैपिटल अगर है इधर तो ज़रूर ए कैपिटल कर दो। मूविंग ऑन, अर्ली 19th सेंचुरी, अगर 19th सेंचुरी के बात करें, अमन चहल, अनमोल प्रीत सिंह सारे पंजाबी आ, आप पंजाबी च ना कंटिन्यू कर लिए अगे। वेयर आर यू फ्रॉम गाइस, पहला दसो किहड़ी सिटीज़ तो हो तुसी? हाँ यस अमन चहल, सो सेम क्वेश्चंस ने, एंड आई होप कि मेरे नाल तुसी फॉलो कर रहे हो कि तुसी एग्जैक्टली सेम ही सही तरीके नाल कीता। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸੇਜ ਹੈ। अर्ली 19th सेंचुरी आ गया, क्योंकि हम डेट वाइज चल रहे हैं तो टेबल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੇ ਬਲੈਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਗਰੋਇੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, अर्ਲੀ ਇੱਥੇ 17 ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1802 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1786 ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ अर्ਲੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਫਾਈਲਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ द फैक्ट्स एंड थिंग्स द वर्ड्स वो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हूँ फोकलोर थोड़े विचों बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं श्योर वॉट एग्जैक्टली इट मीनस, बट इट वुड नेवर स्टॉप अस फ्रॉम ट्रेसिंग द करेक्ट आंसर, एंड फोकलोर इज सर्टनली द करेक्ट आंसर जो मैं इत्थे लिख दूंगा। वैसे थोड़े विचों शायद किसी को पता भी होवे, जिवें सुनिया सुनाइया कहानियां होंदियां ने जिन्हां दा कोई रिटन टेक्सट या रिटन वर्जन नहीं होंदा, असीं उन्हां नूं फोकलोर्स बोल दिंदे हां, राइट। सो आंसर इधर भी हाईलाइट हो रहा है, मेरे तो थोड़ा जिहा ज़्यादा ही छोटा फॉन्ट हो गया, मे बी शायद तुहानूं नज़र ना आ रहा होवे, नैक्सटली मैं थोड़ा जिहा वड्डा कर लेना। हुण इत्थे आ गया दैट टू बी मोर चिल्ड्रन सेंटर्ड, मतलब उन्होंने होर बच्चों को ध्यान च रख के बनाई है। नर्सरी राइम्स एंड डैश, बस एक चीज़ होर देख लेनी है आप जो नर्सरी राइम्स नाल मैच कर दी होवे। इधर आ गया जी अगली ही लाइन विच, बोथ नर्सरी राइम्स सिलेक्टेड बाय जेम्स whatsoever the name for a folklore society in a end, collection of end लग गया, इधर मतलब वो दूसरी चीज़ बारे दसन जा रहे हैं। सेकंड इज collection of fairy stories by the scholarly Grimm brothers. Grimm brothers, they are very popular, and even there is one Cambridge book ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ Grimm brothers ਦੇ children literature ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ reading passage है। So of course what's the answer to this question? Nursery rhymes, and we would put fairy stories. Now the next one, इतने messages सर नहीं सिया passage, चलो कोई गल नहीं है, इन्हों जस्ट अपनी रीडिंग इंप्रूवमेंट मान के चलो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सी या नहीं सी मैटर नहीं करता। कई बार की होंदा पैसेज सेम होंदा, क्वेश्चंस थोड़े जो चेंज कर देंगे ने, राइट। फॉर एग्जाम्पल हो सकता कि तुहाडे क्वेश्चंस थोड़े जो डिफरेंट तरीके नाल पूछे गए होंगे, पैसेज सेम है, स्टिल तुसी उदों ट्रेस आउट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस नूं, राइट। अगर तुसी जस्टिफाई कर दो तो फाइन है, बट ऑन अ गिवन डे अगर ए पैसेज ते ए क्वेश्चंस ने उन्होंने किद्दां डील करना ते किद्दां करेक्ट आंसर्स लीस्ट टाइम दे विच आइडेंटिफाई करने हैं, दिस इज अ प्राइम मोटिव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन। नाउ लेट 30s पहुंच गए आप। स्टोरीज ऑफ हार्मफ्री डैश, हुण हथे हार्मफ्री बन गया एक एडजेक्टिव, मैनूं कोई नाउन ट्रेस करना कि वो जिहड़ी चीज़ सीगी उहदियां जिहड़ियां कहानियां सीगियां वो जिहड़ा चीज़ सीगी वो हार्मफ्री सी, उहदियां स्टोरीज। सो 1930s देखो ए स्ट्रॉन्ग कीवर्ड आ गया अपने को, लेट 30s। हार्मफ्री दे लिए आपां की देखांगे, पढ़ ही लैने। बेस्ट सेलर्स इंटेंडेड ऑन एंटरटेनमेंट एज इट्स मोस्ट एस्केपिस्ट इन ब्रिटेन, नॉवलिस्ट such as Enid Blyton and this person described children who were always free to have the most unlikely adventure, secure in the knowledge that nothing bad could ever happen to them in the end. मैं ये information थोड़े लिए highlight कर देना। So 1930s दी गल आ, stories आपा सुनिया ने, stories की है Humphrey Dash, and here they have written
most unlikely adventures, secure in the knowledge that nothing bad could ever happen. So secure is for safety, harm free. And what is that? And adventures. So stories of harm free adventures is the correct answer. Now, moving on, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 persons ਦੇ ਨੇਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ 3 person ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ. ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. Who wrote criticism of children literature? ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ. Used animals to demonstrate the absurdity of fairy tale. ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ. ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ. Was not a writer originally, मतलब खुद राइटर है ही नहीं ऐसी. Translated a book into English. ਇਹਦੀ translation ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. Did not write in the English language. ਇਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ true false not given ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਫਿਲਹਾਲ general IELTS answers of listening, please. Listening is always the same. It doesn't matter academic or GD. And let's move on and figure out कि Thomas Borman the नाम किथे आया. Okay. तो नजर आवे तो मैं जरूर दस दियो. Thomas. There we go. Thomas. Okay. In Britain, a London merchant named Thomas Borman produced Cajanus, the Swedish giant, in 1742, while the more famous book John published. So all this information that we have about this person is that he was a merchant from London who produced a Swedish book nu unhe produce kita. So what is the answer? I really don't think ke tonu kisi tarah da bhi koi issue hona chahiye. And the answer is kyunki wo khud writer hai hi nahi siga, wo ek kisi ka merchant. So for that reason C is the correct answer to this question. Now, Sarah Trimmer di gal aa gayi hai. Sarah is here. So, prominent among such voices, such is plural, pronoun. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵੌਇਸਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. Such pleasing livery was not to last long. Influenced by this decree that all books for children have Robinson Crusoe were a dangerous diversion, contemporary critics saw to it that children's literature should be instructive and uplifting. So ਉਹਨੇ criticism ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, it has to be instructive and uplifting, मतलब encouragement और improvement देने वाला, instructive मतलब knowledge देने वाला होना चाहिए. Prominent among such voices was Mrs. Sarah Trimmer. I think it's enough to read. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ prominent person ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ criticism ਕੀਤਾ. So I think children book ਦੇ criticism ਦੇ ਨਾਲ A is the answer to this question. Now, Grimm's brother, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਨੇ Grimm brother. So here is the information. Both nursery rhymes and collection of fairy tales by scholarly swiftly translated into English in 1823. So there is once again no confusion. एक line, एक word ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ answers associate ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. Didn't write in English language, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, Grimm's ਦੇ scholarly work ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ English ਚ translate ਕੀਤਾ, which justifies that he was not an English writer. So E is the answer to this question. So once again, I've not given that we are left with change the listening answer. So in the meantime, I'm requesting you once again that do you wish or do you want कि हम आपके साथ एक writing का session करें, real exam evaluation करें. कल जो exam हुआ जिसमें food export related essay आया, तो if you will say yes, जितने भी अभी live हैं, अगर आप yes लिख देंगे तो कल मैं आपके साथ एक live session करूँगा और आप में से
कोई भी चाहे तो मुझे अपनी रियल एग्जाम में जैसे अपनी टास्क 2 लिखा वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइव रहकर मैं आपका वो टास्क चेक करूँगा और उस पर आपको फीडबैक दूंगा, आपकी इवैल्यूएशन करके बताऊंगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितने आपके स्कोर आ सकते हैं, और उसके बाद हम आपको एक उसका एक रीजनेबल सैम्पल आंसर दैट कैन गेट यू इजीली बैंड 6.5 प्लस वो एक सैम्पल आंसर शेयर करेंगे। कॉपी करन लगे सर, कॉपी कॉपी किसकी करने लग करा? I really don't think that I have to copy. And let's move on with the true false not given. Children didn't start to read book until 1700. मतलब कि until 1700, once again 1600 से जो years की बात है उस टाइम तक बच्चों ने रीड करना नहीं शुरू किया था। 1700 is my strong keyword. जैसे ही क्वेश्चन टाइप चेंज होता है एक बार दोबारा से हम टॉप पे जा सकते हैं सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया। 1700 ये रहा। ओके, येट सो फार एज रिटन डाउन लिटरेचर इज कंसर्न, रिटन लिटरेचर की अगर बात करें, while there were stories in print before 1700, क्लियर कर दिया कि प्रिंट में स्टोरीज पहले भी होती थी, that children often seized on when they had the chance, मतलब जैसे उनको मौका मिलता था वो अपॉर्चुनिटी सीज कर लेते थे, पकड़ लेते थे, जाने नहीं देते थे। कहने का मतलब इधर कह रहा है कि उनको पढ़ना नहीं आता था, मतलब तब तक उन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। एंड हियर से दे नेवर यूज्ड टू मिस द चांस प्रायर टू दैट टाइम। सो दोनों बातें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारा ट्रिमर बिलीव दैट चिल्ड्रन बुक शुड सेट गुड एग्जाम्पल्स। ये बंदी कह रही है कि चिल्ड्रन बुक को गुड एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। अगर आपको याद हो, सारा का नाम हमने अभी देखा था, थोड़े टाइम पहले बात की थी, जिसने क्रिटिसाइज किया था बुक्स को। एंड ये रहा सारा ट्रिमर हु मैगजीन द गार्जियन ऑफ एजुकेशन carried the first regular reviews of children book. It was she who condemned fairy tales for their violence and general absurdity. Her own stories, fabulous stories, described talking animal who were always model of sense and decorum. Very much clear that she was the one who used to feel that children book should be have some kind of positive for the children. So, of course, the answer is true. Parents were concerned about the violence in children book. अभी वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो थे ना चिल्ड्रन बुक में वायलेंस से काफ़ी चिंतित थे। हमने काफ़ी सारे पैराग्राफ्स पढ़े, उसमें हमें पेरेंट्स के बारे में नहीं मिला है कुछ, और कुछ रह गए हैं, तो उसमें फटाफट स्ट्रॉन्ग कीवर्ड एज अ पेरेंट ढूंढ लेते हैं। अगर आइडिया नहीं है तो बेस्ट थिंग टू अचीव द टास्क इन टाइम, कि जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर दे या एकदम से आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप बेस्ट क्या कर सकते हो, फॉर द टाइमिंग उस क्वेश्चन को लीव कर सकते हो, अगले क्वेश्चंस कर सकते हो। तो यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन में आई रियली डोंट सी वेयर दिस पेरेंट्स थिंग इज इन्वॉल्व। फॉर दैट रीजन इफ यू विश you can put the answer as not given as well. An interest in the folklore changed the direction of the development of children book. जब folklore में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो उसने चिल्ड्रन डेवलपमेंट ऑफ बुक है जो बुक्स बच्चों की थी उसके डायरेक्शन ही चेंज कर दी, मतलब डिफरेंट हो गया बिल्कुल। हमने पढ़ा था फोकलोर के बारे में, लेट्स सी व्हाट चेंज इट ब्रॉट। इंफॉर्मेशन कोलन है तो पीछे रीड कर लेते हैं। So the moral story for children was always threatened from within, given the way children have of drawing out entertainment from the sternness moralist. But the greatest blow होता है झटका, चेंज के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, to the improving children book was to come from an unlikely source indeed. इंटरेस्ट इन फोकलोर। वेरी मच क्लियर कि जो इसकी इम्प्रूवमेंट हुई, ये जो सबसे बड़ा बदलाव या ब्लो हुआ
वो किससे हुआ, उसका सोर्स क्या था, इंटरेस्ट इन फोकलोर. एंड हियर इज ऑल्सो द सेम इंफॉर्मेशन कि फोकलोर brought the change. So the answer is true. In fact, we are left with one question only. Today, children's book writers believe their work should appeal to both children and adult. Adult नहीं बोलना, adult. वो कह रहे कि आज ਜਿਹੜੇ writers ने today, they want कि appeal is convince करना, impress करना, and they want कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ work ਆ, it should appeal both age groups, children and adult, and it is about now. अगर present the question या paragraph या reading heading ਹੁੰਦਾ, it ends at future. And if it is about the past, then the chances are the very last paragraph talk about at present what we think about those things. So if we wish, we can check it out. This is what we just read, right? And we are already on the last paragraph, G paragraph, and here we can see the writer of these works are now. This is now. At present, we are concerned what they do right now, often recommended to the attention of adult as well as child readers, echoes the 19th century belief. So now, attention, adult, children, and all the keywords are here that refers to this question. And to the question number 26 also, the answer is true. So, as said that if you wish, we can have a live session on the writing part tomorrow. Can you recommend a time? What would be the best time for the live class tomorrow to have a discussion on the IELTS writing? And if you have any question or any doubt related to the upcoming exam, then please let me know. 23 दोबारा दस्यो 23 कौन सा था? Sarah Trimmer believe that children book should set a good example. And of course, the answer is true, my dear, because we read about Sarah, who criticized, and she believes that the information in the children book is not according to the children, and that's the reason why they said that the book has to be instructive and uplifting, and she was among those who raised the voice. That's the reason why उसने इवन रिव्यू भी किया, चेक भी किया, उसको ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उसने कंडेम किया है फेरी टेल्स को, उनमें जो वायलेंस है, उनमें जो जनरल एब्सर्डिटी है, एंड फॉर दैट रीजन शी इज द वन हु बिलीव्स कि जो ये जो बुक्स हैं उनमें कुछ बेटर होना चाहिए बच्चों के लिए, एंड फॉर दैट रीजन दे शुड सेट गुड एग्जाम्पल. आंसर इज ट्रू.